हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सीआरएम आईएएस। मेरा नाम डॉक्टर सलोनी शर्मा है और मैं जुड़ चुकी हूँ आपके साथ विद अनदर सेशन ऑफ डेली न्यूज एनालिसिस जो कि है 11 जून 2026 का। तो लेट्स स्टार्ट। 7 news articles we will cover in this session. Okay, after covering the news article, I have provided the question also along with it on UPSC prelims pattern. So do solve it. एंड इसके बाद में आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं इजीली। ओके, सो द इम्पोर्टेंट न्यूज फॉर द डे आर दीस एंड वन बाय वन आई टेल यू ये कहाँ से आपको कौन से सब्जेक्ट की है। ओके, so let's start. The first news article: how NSBs are here to make India's national highways safer. ठीक है, ये आर्टिकल आपका रूल्स के सिक्योरिटी के बेसिस पे आएगा। ये आर्टिकल आपका सिक्योरिटी में आ जाएगा एंड गवर्नेंस का आर्टिकल है। विल रीड अबाउट दिस। सेकेंड आर्टिकल है आपका हाउ बिरसा मुंडा हैव डिफाइंड आदिवासी आइडेंटिटी एंड राइट्स। बिरसा मुंडा पे आर्टिकल है। दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू योर हिस्ट्री पार्ट। हिस्ट्री का आर्टिकल है ये। Third one, long-term balance of payment solution needed. This article is from the economics part. Fourth one is your Ebola virus. This is for your science and technology part. Fifth is your floating solar. This is again of science and technology part. Also, you can consider it an environment. Solar energy पे based है ये article, तो environment का भी part हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑफ फ्लेक्सी वर्कर्स। फ्लेक्सी वर्कर्स आपका आ जाएगा इकोनॉमिक्स में एंड यू कैन कंसिडर इट विद द पार्ट ऑफ सोसाइटी एज वेल। ओके, द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे इज योर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। ये आर्टिकल आपका आ जाएगा अगेन इन इकोनॉमिक्स प्लस योर सोसाइटी सेक्शन प्लस योर गवर्नेंस सेक्शन एज वेल। ओके, so ये है basically highlights what we read about today. Okay, so let's start one by one. This is the first news article, and I've taken this from PIB, which is a very important source. You have to refer to it. So ये article basically है Ministry of Road Transport and Highways का है, ठीक है? PIB से I have taken it. Eyes on every mile, how NSBs are here to make India's national highways safer. 11th of June का article है, ठीक है? इसमें देखते हैं हम क्या क्या है। एनएसबी की फुल फॉर्म देखते हैं पहले कि एनएसबी होता है। एनएसबी इज अ नेटवर्क सर्वे व्हीकल। यू शुड नो दिस थिंग फर्स्ट, नेटवर्क सर्वे व्हीकल। नाउ इसका काम क्या होता है? It is an innovation equipped with laser profilers, GPS, and cutting-edge imaging technology. Basically, सारी न्यू टेक्नोलॉजीज इस व्हीकल में यूज की है नेशनल सर्वे व्हीकल, नेटवर्क सर्वे व्हीकल में। नेटवर्क सर्वे व्हीकल बेसिकली आपका एक रोड्स की इंस्पेक्शन करने के लिए एक व्हीकल है जो कि कहीं भी आपकी रोड्स कहीं से भी डैमेज है उस चीज को रिकॉर्ड करे, ठीक है? It scans the road surface for cracks, potholes. Potholes होते हैं गड्ढे and unevenness, turning the highways into living digital maps. Highways को basically digital maps में convert करने का काम है इसका, ठीक है? It is a revolution in how India monitors, maintains, and safeguards its national highways. National highways की revolution में इसका योगदान रहेगा. This initiative, okay, network survey work. Now, what do we say next? To enhance the riding experience of commuters, commuters होते हैं जो travelers होते हैं, on India's national highways, the Ministry of Road Transport and Highways. So this ministry becomes important. अगर आपको पूछे कि किस मिनिस्ट्री के अंडर इनिशिएटिव है, बेसिकली रोड्स की सेफ्टी से रिलेटेड है, रोड्स हमारी अच्छी रहे, वेल बिल्डअप रहे, so it comes under your Ministry of Road Transport and Highways. Okay, has announced a major leap forward, the deployment of network survey vehicles equipped with advanced 3D laser-based systems across all states and its network. ठीक है, 3D based systems रहेंगे इसमें। Next, these high futuristic vehicles क्योंकि बहुत advanced technologies use कर रहे हैं इसमें। Deployed at several national highway corridors are more than survey machines. सिर्फ survey machines नहीं है ये, it's more than that. How? They are digital guardians of road quality. Road quality के digital guardians हैं, ठीक है? Guardian होता है जो रक्षा करता है उस चीज की।
By scanning every stretch of road, NSVs collect detailed data on road inventory and surface conditions. रोड में क्या मटेरियल यूज हुआ है, उसकी इन्वेंट्री क्या रही है, और उसकी अभी फिलहाल सरफेस कंडीशंस क्या हैं. आइडेंटिफाइंग डिफेक्ट्स इन पॉटहोल्स एंड पैचेस. जहां जहां पॉटहोल्स होंगे, पॉटहोल्स होते गड्ढे एंड पैचेस होंगे, वो चीज को वो आइडेंटिफाई. ठीक है. नाउ समथिंग मोर अबाउट दिस न्यूज आर्टिकल. Let's read about this too. Okay. A network survey vehicle is an advanced, basically definition of network survey vehicle. It is an advanced multi-sensor vehicle. बहुत सारी sensors लगे हैं इसमें. That is why it is a multi-sensor vehicle. Deployed by the National Highways Authority of India (NHAI) ने deploy किया है. Equipped with lasers, 360-degree cameras, and GPS. GPS is your graphic positioning system. Okay. Global positioning system. It automatically assesses road quality and defects. Road quality or defects को identify करता है, like potholes and cracks, to enhance highway safety and infrastructural planning. So basically क्या होता है, हमारी highway safety improve होती है and infrastructure की planning enhance होती है. ठीक है. Next, इसका significance क्या है इंडिया के highways के लिए? How is this initiative helpful? तो ये basically इसके advantages हैं. Proactive maintenance. Roads की proactive maintenance हुई. It shifts highway management from a reactive complaint-based approach. हम लोग कब रिएक्ट करते हैं? बेसिकली रिएक्टिव कंप्लेंट बेस्ड अप्रोच क्या होती है? जब कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है, जब उसके बारे में कंप्लेंट करने के लिए उसके बाद में मेजर्स लेने शुरू करते हैं. ठीक है. कंप्लेंट बेस्ड अप्रोच रहती है हमारी, रिएक्टिव रहती है. प्रोएक्टिव में, प्रोएक्टिव होता है कि आप खुद से पहले से डिसीजंस लो, पहले से इनिशिएटिव लो कि वो चीज खराब होने से पहले आप उसकी बार बार मेंटेनेंस चेकअप्स करते रहो. बट दैट थिंग इज मिसिंग. तो हमारी रिएक्टिव एंड कंप्लेंट बेस्ड अप्रोच होती है इस चीज को अवॉइड करने के लिए. इस चीज से शिफ्ट कर रहे हैं कहाँ पे? प्रोएक्टिव डेटा ड्रिवन सिस्टम where defects are flagged before they cause accidents. एक्सीडेंट्स होने से पहले जो डिफेक्ट्स हैं वो फ्लैग हो जाए, इसके लिए ये चीज बहुत कामयाब रहेगी. दिस इज अ प्रोएक्टिव मेंटेनेंस. वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम रिएक्टिव टू अ प्रोएक्टिव अप्रोच. दिस थिंग you have to remember. Next point is mandated compliance. The Ministry of Road Transport and Highways mandates NSB surveys for all national highways. सभी नेशनल हाईवेज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इस चीज को कंपल्सरी कर दिया, मैंडेटरी कर दिया. Projects prior to the start of work and at regular 6 months के intervals. तो every 6 months के intervals में ये चीज रहेगी, मैंडेटरी रहेगी, सर्वेज होंगे वहाँ. ठीक है. Now, transparency increase होगी इस चीज से. How? It ensures the accountability of construction and maintenance firms. जिन लोगों ने वो रोड कंस्ट्रक्ट की होगी, कंस्ट्रक्शन करेंगे एंड जो चीज की मेंटेनेंस करेंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं कि वो लोग जवाबदेही होंगे. As milestone payments and completion certificates require adherence to the strict road quality criteria. ठीक है. पेमेंट्स एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स जो होंगे वो तभी मिलेंगे जब वो रोड क्वालिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं. So these are the advantages of this initiative: proactive maintenance, mandated compliance, and transparency burden. Next, we have the prelims practice question. Based on this article, you need to answer long term. Okay. So consider the following statements regarding the network survey vehicle initiative in India. 4 statements हैं, उसके बेस पे आपको आइडेंटिफाई करनी है which of the statements given above are correct. तो ये चीज आपको क्वेश्चन में पहले से आइडेंटिफाई करनी है कि उन्होंने करेक्ट पूछा या नॉट करेक्ट पूछा, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करना है. ओके. We'll mark up the statements which are right over here. We'll mark up which of the statements are wrong over here so that हमें आंसर करने में easy हो जाए. तो नेटवर्क सर्वे व्हीकल के इनिशिएटिव के बेसिस पे ये स्टेटमेंट्स हैं. ट्राई टू आंसर. The first statement, it is a flagship initiative of National Highways Authority of India under the Ministry of Road Transport and Highways to digitize road asset management. So basically ये initiative के बारे में define किया है कि initiative का purpose क्या होगा, aim क्या है. So this statement is correct. National Highway Authority of India के अंदर आता है under the Ministry of Road Transport and Highways to digitize the road asset management. ठीक है. उसके डिजिटल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए रोड एसेट मैनेजमेंट के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है.
ठीक है, नेटवर्क सर्वे व्हीकल का NSV इनिशिएटिव। Second statement that these vehicles use 3D based technology and high resolution cameras to identify road defects like potholes and cracks automatically without manual intervention. तो ये भी हमने पढ़ा, हाईटेक की सिस्टम्स यूज होंगे इसमें, 3D सिस्टम्स यूज होंगे, हाई डेफिनेशन कैमरास यूज होंगे, सो दैट हमारे रोड पे पॉटहोल्स और क्रैक्स ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाए, मैनुअल इंटरवेंशन ना चाहिए, मतलब कि ह्यूमंस की इंटरवेंशन को मिनिमाइज करता है इनिशिएटिव। ओके, so this statement also becomes correct. Now next statement is a third statement. The data collected by these vehicles is uploaded to an AI-based portal known as Data Lake for analysis and actionable maintenance insights. ये हमने आर्टिकल में नहीं पढ़ा, but this is an additional information point which you should know. ठीक है, डेटा लेक एक पोर्टल होगा जिसपे यहाँ से हम लोग डेटा कलेक्ट करके वहां पे अपलोड करते हैं। For what? For analysis and actionable maintenance insights, कि उस चीज पे आगे फर्दर हम लोग काम कर सकें। ठीक है, डेटा हमने कलेक्ट कर लिया व्हीकल की, बट उस चीज पे फर्दर एक्शन लेने के लिए डेटा लेक पोर्टल पे डेटा अपलोड हो जाएगा, देन उस पे एक्शन कंसीडर करेंगे। ठीक है, एक्शन लिया जाएगा। So this statement is also correct statement. Now coming on to the fourth statement, which is the last statement. The use of NSVs is mandatory only for the initial construction phase of highway project and is not required for post-construction operational maintenance. तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ इनिशियल कंस्ट्रक्शन में ही NSVs का रोल मैंडेटरी है, बट जब बाद में कंस्ट्रक्शन के बाद में पोस्ट कंस्ट्रक्शन ऑपरेशनल मेंटेनेंस के टाइम पे उसका रोल मैंडेटरी नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे भी उसका रोल रहेगा एंड मेंटेनेंस के टाइम पे भी रहेगा। हाउ डू वी नो दिस? कि हमने अभी पढ़ा है कि 6 मंथ्स के टाइम गैप पे मेंटेनेंस चेकअप्स होंगे, एवरी 6 मंथ्स के गैप्स पे सर्विस कंडक्ट होंगे, व्हिच आर योर maintenance service. Okay, so the statement becomes wrong. We have first, second, and third statement as a correct statement. So they have asked how many of the given statements above are correct. So your answer is A, 1, 2, and 3. Okay, I hope this article is clear. PIB का article है, this is an important article. You should know about this. NSB sponsored initiative के अंदर आ रहे हैं, road transport के initiative के अंदर आ रहे हैं basically. Okay. तो इस स्टेटमेंट की इनकरेक्टनेस पे भी कुछ एक्सप्लेनेशन है। द यूज ऑफ NSVs is not a one time process according to the government mandates. Surveys must be conducted not only before the start of work, सिर्फ वर्क स्टार्ट होने से पहले ही नहीं सर्विस कंडक्ट होंगे, but also at regular intervals of 6 months, 6 months के intervals पे होंगे। This is also important point. Thereafter to ensure ongoing monitoring of the highway quality. ठीक है, so this was the article. First article. Now let's come on to the next article, which is also a very important article. बिरसा मुंडा पे हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते ही रहते हैं यूपीएससी में, सो लेट्स सी। हिस्ट्री का आर्टिकल है, ठीक है, हाउ बिरसा मुंडा हेल्प डिफाइन आदिवासी आइडेंटिटी एंड राइट्स। दिस इज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। ये आर्टिकल अब क्यों आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी अबाउट दैट। इस आर्टिकल का कंटेक्स्ट क्या है बेसिकली। On June 9 को क्या होता है? On June 9, the death anniversary of iconic Adivasi leader and freedom fighter Birsa Munda falls. तो 9 जून को डेथ एनिवर्सरी होती है बिरसा मुंडा जी की। फॉर दैट रीजन दिस आर्टिकल इज इन न्यूज। ओके, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज एन इम्पोर्टेंट आर्टिकल। अपन पढ़ेंगे बिरसा मुंडा जी के कंट्रीब्यूशंस क्या थे एंड हु वाज बिरसा मुंडा। लेट्स डाइव इनटू इट। Birsa Munda is one of the most influential figures in the history of Chota Nagpur Plateau. छोटा नागपुर प्लेटो कहाँ पड़ता है? इंडिया के ईस्टर्न साइड पर पड़ता है, आपका झारखंड वाले रीजन्स में पड़ता है। The mineral rich region spanning Jharkhand and adjoining. Okay, mineral rich region है छोटा नागपुर प्लेटो। Revered by many as धरती आबा, this is an important thing. बिरसा मुंडा जी को धरती आबा भी बोलते हैं। धरती आबा का मतलब होता है फादर ऑफ द अर्थ। He is remembered for leading the Ulgulan or the Great Tumult. This is very important to have a direct question in exams. The Ulgulan movement is connected with which freedom fighter? Great Tumult is connected with whom? ठीक है, तो इसका आंसर आपका बिरसा मुंडा ही रहेगा। ग्रेट टुमुल्ट क्या था? It was a movement against colonial rule. Britishers के against ये movement थी। And Deepus. Deepus कौन थे? This is also important. Deepus were non-tribal outsider zamindars amid the growing encroachment on Adivasi land.
बेसिकली एम इस मूवमेंट का क्या था कि जो ग्रोइंग एनक्रोचमेंट है, कब्जा किया जा रहा है आदिवासी लैंड पे, उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट थी। डिपूज के अगेंस्ट थी। डिपूज कौन थे? ट्राइबल आउटसाइडर्स, नॉन ट्राइबल आउटसाइडर्स, जो कि ट्राइबल नहीं, नॉन ट्राइबल आउटसाइडर्स अमीराज, ठीक है। And cultural institutions in the closing years of the 19th century. Approximately 1800s के end में, that is the 19th century के end में ये movement conduct हुई। ग्रेट टमोल्ड और उलगुलन बोलते हैं इसको। डिपूज के अगेंस्ट थी, colonial rule के अगेंस्ट थी। क्यों? क्योंकि उनकी ग्रोइंग एनक्रोचमेंट आदिवासी लैंड के ऊपर, उसके अगेंस्ट थी ये मूवमेंट कि हमारी लैंड्स पे कब्जा ना किया जाए आउटसाइडर्स के थ्रू, ठीक है ना। Birsa's influence, however, extended beyond the borders of current Jharkhand state. अब ऐसा नहीं है कि उनका बिरसा मुंडा जी का इन्फ्लुएंस लिमिटेड था सिर्फ झारखंड के, बट उसके बियॉन्ड भी एक्सटेंड किया था। कहाँ कहाँ? टू द रिमोट विलेजेस ऑफ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश and more. The adjoining states also his influence had expanded. Okay, now let's come on to the next thing. Birsa cannot be understood merely as the leader of an agrarian uprising. ऐसा नहीं है कि बिरसा मुंडा जी सिर्फ एक एग्रेरियन अपराइजिंग क्या होती है, फार्मर्स के लिए जो अपराइजिंग है उसके ही लीडर थे, बट ही वाज आल्सो, ही आर्टिकुलेटेड अ ब्रॉडर विजन ऑफ आदिवासी आइडेंटिटी। आदिवासी राइट्स को उन्होंने आगे रखा था। ऑटोनॉमी, लैंड राइट्स, रिलीजन एंड सेल्फ रूल नोन एज डिसूम। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट नाउ। तो इन चीजों के लिए उन्होंने फाइट की थी वहां पे फॉर अ ब्रॉडर विजन which was based on the आदिवासी आइडेंटिटी, कि उनकी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज किया जाए, आदिवासी को ऑटोनॉमी मिले उनको। ऑटोनॉमी क्या होता है कि राइट टू डिसीजन मेकिंग मिले, ठीक है। लैंड राइट्स मिले, रिलीजन पे उन्होंने किया था, एंड सेल्फ रूल। सेल्फ रूल वाज नोन एज योर डिसूम, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज योर फ्रॉम रेजिस्टेंस टू स्टेटहुड। The rebellion led by Birsa Munda reached its climax at Dombari. Dombari Guru is important, a hill in Kunti village in January 1899. So this timeline is again important, January 1899. This was where thousands of Birsa's followers gathered to assert their rights over land and challenge the British authorities. इस जगह पे वो लोग इकट्ठे हुए। The British forces eventually surrounded the hill and fired into the crowd. ब्रिटिशर्स ने वो हिल को सराउंड किया और वहां पे फायरिंग स्टार्ट कर दी। In Adivasi memory, this was a massacre. Basically, a massacre was conducted that killed hundreds, though official records estimate a much lower toll. Officially records में इतने ज्यादा लोगों की गिनती नहीं है जिनका डेथ हुआ है, but at the ground level, in actuality, there were more than hundreds of deaths. Okay? Birsa was arrested and died in Ranchi jail on June 9, 1950. Okay? The episode compelled, अब ये जो एपिसोड हुआ था पूरा फायरिंग का एपिसोड हुआ था जहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट की थी, वहां पे फायर किया था ब्रिटिशर्स ने। नाउ दिस एपिसोड compelled the colonial administration to initiate land reforms. इस एपिसोड के बेसिस पे लैंड रिफॉर्म्स इनिशिएट किए थे ब्रिटिशर्स ने। That culminated in legal recognition of खुनखती rights. अब इसके एंड में क्या हुआ था कि खुनखती राइट्स की उन्होंने रिकॉग्निशन कर दी थी। खुनखती राइट्स हैं बाद में, एंड लेटर द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1908। तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1908 भी इसी रेजिस्टेंस के थ्रू हुई थी, एंड योर खुनखती राइट्स आल्सो वर अ पार्ट ऑफ दिस रेजिस्टेंस ओनली। इसकी वजह से ही वो आए थे इन एग्जिस्टेंस। ओके, खुनखती क्या है? नाउ वी सी अबाउट इट। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Kunkhati was the traditional Munda system of collective land ownership and governance. Kunkhati system में कलेक्टिव ओनरशिप होती है लैंड की। एक अकेले पर्सन के पास वो लैंड ओनरशिप नहीं रहेगी, बट इट विल बी ऑन अ कलेक्टिव बेसिस। बहुत सारे लोगों की उसमें ओनरशिप रहेगी, गवर्नेंस रहेगी। Under the system, the descendants of the original settlers cleared forests and established a village known as Kunkhati dance. तो जो ओरिजिनल सेटलर्स थे उनको क्या बोलते थे? खुनखती दास। दे हेल्ड कलेक्टिव राइट्स ओवर द विलेज टेरिटरी। उनकी कलेक्टिव राइट्स थे उस टेरिटरी पे। ओके, नाउ आते हैं व्हाट इज द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। ये एक्ट भी इसी रिवोल्ट की वजह से इन एग्जिस्टेंस आई थी, ठीक है। द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट वाज enacted by the British in 1908 after decades of Adivasi resistance.
ठीक है, एक डिकेड के बाद में हुआ था क्योंकि 1899 में ये रेजिस्टेंस हुई थी। 1908 में दिस एक्ट वाज पास, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, including Birsa Munda's uprising to protect the customary land rights in Chota Nagpur region. This was the purpose of this act कि जो customary rights थे छोटा नागपुर region में उनकी protection के लिए this act came into force. Okay. The central objective was preventing the transfer of Adivasi land to non-Adivasis and legally recognizing traditional land tenure systems. तो इस एक्ट के थ्रू जो आदिवासी की लैंड थी वो नॉन आदिवासी को ट्रांसफर होगी, बंद होगी। ठीक है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के थ्रू। द एक्ट रिमेन्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेफगार्ड्स फॉर ट्राइबल लैंड इन झारखंड। ठीक है, अब भी वो एक्ट जो है झारखंड रीजन में रिमेन्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेफगार्ड्स ऑफ ट्राइबल लैंड। ठीक है, बिकॉज इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, दैट ट्राइबल लैंड जो होती है दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू द नॉन ट्राइबल्स और नॉन आदिवासीज। दिस वाज इट। Now, next पे आते हैं। Now, Birsa Munda ji's followers attribute various miracles to him. उनको भगवान की तरह मानते हैं जो बिरसा मुंडा जी के followers हैं, okay? And consider him as a messiah, referring to him as भगवान। And the aforementioned धरती आबा भी बोलते हैं, ठीक है? भगवान बिरसा नेवर टारगेटेड एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अब उनके रिलीजियस व्यूज के बारे में बात की कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन को कभी टारगेट नहीं करते थे। He opposed both the outsiders from caste society who were appointed as zamindars and Christian missionaries, as he saw them as part of the same system of exploitation. जो outsiders थे उनके अगेंस्ट वो खड़े होते थे, but he was very religiously tolerant person। क्या उनको धरती आबा के नाम से जानते हैं, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से भी जानते हैं। So this was all about your बिरसा मुंडा। अब एक क्वेश्चन लेंगे प्रीलिम्स का क्वेश्चन, ठीक है? इसी के बेसिस पे what is the traditional land system that Birsa Munda sought to protect from British landlords and outsiders? Outsiders were deep. अब कौन सा ऐसा लैंड सिस्टम था जो बिरसा मुंडा जी ने प्रोटेक्ट करना था? कौन सा था? You have read about it right now. So the answer is D. Kunkati system. This is again a very important thing. You should know this on your tips. ठीक है, ये भूलना नहीं चाहिए। अब ये जो बाकी के ऑप्शंस दिए इन्होंने, रियात वाइड, महल वाइड, जमींदारी, ये सारे लैंड सिस्टम से, लैंड रिफॉर्म सिस्टम से बेसिकली। तो दिस इज समथिंग एल्स। नाउ कुंतली सिस्टम था व्हिच वाज रिलेटेड टू योर बिरसा मुंडा। क्या है वो? दिस इज क्लियर। डी आंसर, कुंतली सिस्टम। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं व्हिच इज एन इकोनॉमिक्स आर्टिकल। Workers' remittances crossed $100 billion in financial year 26, but long-term balance of payment solution is needed. अब ये पहले हेडलाइन समझते हैं कि क्या कह रहे हैं कि जो वर्कर्स के रेमिटेंसेस है, रेमिटेंसेस क्या होते हैं? जो भी ट्रांसफर पेमेंट्स होती है, तो मान लो यहाँ से कुछ बच्चे चले गए बाहर, कनाडा चले गए मान लो, ठीक है, एंड नाउ दे आर सेंडिंग द मनी बैक टू देयर फैमिली इन डॉलर्स, दैट इज नोन एज योर रेमिटेंसेस। ठीक है, जो भी बाहर से पैसे आ रहे हैं दोस आर योर रेमिटेंसेस। जो यहाँ के लोग गए वहाँ पे मे बी एज NRIs और OCIs जो यहाँ पे भेज रहे हैं, दैट इज योर रेमिटेंसेस। तो अब ये जो वर्कर्स हैं उनके रेमिटेंसेस दे क्रॉस $100 billion इन फाइनेंशियल ईयर 26। फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड कि $100 billion का मार्क क्रॉस कर लिया रेमिटेंसेस ने, इंडिया के रेमिटेंसेस। But the article says, but long-term balance of payment solution is needed. We cannot rely solely on remittances. सिर्फ remittances पे हम लोग rely नहीं कर सकते हैं, but हमें अपनी इकोनॉमी को strengthen करने के लिए balance of payment solution के balance of payment के solutions चाहिए long term basis. Okay? Now, let's read about this. See, this is a graph. Indian brokers limited report $110 billion into India in financial year 26. इससे ग्राफ जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है? रेमिटेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में इतने दे दें, 25 में you have this one, 26 में see this one. ठीक, they are rising this. क्या बात है आर्टिकल पे? Despite the capital outflows from financial markets and subdued net foreign direct investment inflows, तो बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट से आउटफ्लोज हो रहे हैं और जो FDI के इनफ्लोज हैं वो कम होते जा रहे हैं इंडिया में। India managed to record a balance of payment BOP surplus of $7.22 billion in January to March 2026 quarter.
इन सब शॉर्टकमिंग्स के बावजूद कैपिटल आउटफ्लोज हो रहे हैं, एफडीआईज नहीं आ रहे हैं इंडिया में, still India managed to get a positive balance of payment. Okay, net positive में रहा है, balance of payment surplus में रहा है, ठीक है. Aided by a factor thought to be at risk from the ongoing war in West Asia, remittances from abroad. अब जो है, जो वॉर की करती, जो वेस्ट एशिया में वॉर है, उसकी वजह से ऐसे अज्यूम किया था कि वो रेमिटेंसेस बढ़ गए हैं क्योंकि वॉर की सिचुएशन चल रही है, तो पीपल आर सेंडिंग मोर रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड टू देयर फैमिलीज इन इंडिया, ठीक है. नाउ आई हैव रिटन अबाउट समथिंग अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस. की बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस क्या होता है बेसिकली, बीओपी सरप्लस क्या होता है. व्हेन द क्रेडिट एक्सीड्स द डेबिट, जो हमारा ग्लोबल लेवल पे क्रेडिट के लेवल्स हैं, जब वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू द डेबिट लेवल्स ग्लोबली, दैट इज योर बीओपी सरप्लस इन शॉर्ट, ठीक है. इकोनॉमी के लेक्चर्स में आप बाकी डिटेल में पढ़ेंगे. कंट्री इज अ नेट लेंडर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. क्योंकि सरप्लस जब होगा, दैट मीन जब हमारा क्रेडिट ज्यादा है एज कंपेयर टू डेबिट. क्रेडिट मतलब कि हम दे रहे हैं जो वो साथ में, डेबिट होता है जो हम ले रहे हैं बाहर से, वो कम है. देन वी आर अ नेट लेंडर टू द वर्ल्ड, ठीक है. So it also means that we are accumulating foreign reserves. Foreign reserves हमारी कंट्री में आ रही है. नेट accumulator of foreign reserves हम लोग बन जाते हैं if we have a balance of payment surplus. अब यही चीज अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट होगा, दैट वुड बी ऑपोजिट. बिल्कुल इसका ऑपोजिट होगा. डेबिट ज्यादा होगा, क्रेडिट कम होगा. कंट्री इज अ नेट इंपोर्टर, नेट बोरोवर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है. बोरोवर बन जाएगी कंट्री और उसके फॉरेन रिजर्व्स भी कम होते जाएंगे, डिमिनिशिंग फॉरेन रिजर्व्स. Okay, now let's come on to the article. In 2025-26 as a whole, Indian workers abroad sent back home a record $110.47 billion, up from up 26%. 26% ज्यादा है ये पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में, जहां पे $87.55 billion था 2024 to 5. Now this is the first time, this is important, that workers' remittances have ever crossed the $100 billion mark in a single year. This is why this news article is important. $100 billion का mark आज तक जो कभी नहीं क्रॉस हुआ था, this has been crossed by the remittances. ठीक है. Next article. In addition to the war, the rupee's sharp fall over the course of 25-26. अब देखो, वॉर एक फैक्टर है जिसकी वजह से रेमिटेंसेस ज्यादा हो सकते हैं. दूसरा फैक्टर है रुपी का शार्प फॉल. अप्रोक्सीमेटली $1 इज अप्रोक्सीमेटली नाउ रीचिंग इक्वल टू 100 रुपीज, ठीक है. रुपी का फॉल होता जा रहा है, ठीक है. नाउ दीज टू फैक्टर्स वुड हैव आल्सो इंसेंटिवाइज्ड द सेंडिंग ऑफ मोर डॉलर्स. इन चीजों से डर के लोगों ने ज्यादा रेमिटेंसेस सेंड करने शुरू कर दिए इंडिया में, और एनी अदर करेंसी बैक होम than usual, as it would lead to family members in India getting more rupees for each unit of the foreign currency. ये रीजन है जिसकी वजह से लोग ज्यादा मनी सेंड कर रहे हैं. वो $1 अगर बाहर से सेंड करेंगे तो यहाँ पे रुपीज उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी क्योंकि रुपीज डेप्रिशिएटिंग इन कंपैरिजन टू डॉलर, ठीक है. $1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज होती जा रही है, क्योंकि पहले अप्रोक्सीमेटली आप मान लो अगर 90 के कंपैरिजन में 100 रुपीज मिल रहे हैं. पहले अगर $1 की वैल्यू 90 रुपीज थी, नाउ यू आर गेटिंग 100 रुपीज फॉर दैट. उसकी वैल्यू तो बढ़ गई ना, यहाँ इंडिया में बढ़ गई है. वैसे जैसे रुपीज डिप्रिशिएट हो रहा है तो वो तो हो ही रहा है, बट रेमिटेंसेस की वैल्यू बढ़ गई है. इस वजह से भी रेमिटेंसेस का ज्यादा यहाँ पे इनफ्लो हो रहा है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट. If not for these remittances, the rupee may have fallen even more. अगर ये remittances ना आ रहे हैं फॉरेन से, तो रुपी की गिरावट और ज्यादा देखने को मिली. Now, remittances, however, cannot be relied upon to bail out the Indian economy. अब यही क्रक्स है आर्टिकल की कि रेमिटेंसेस पे हम लोग रिलाई नहीं कर सकते हैं कि वो इंडियन इकोनॉमी की पोजीशन को अच्छे से स्ट्रेंथन करके रखेगी. दिस इज अ टेम्पररी मेजर. दिस इज बेसिकली अ कुशनिंग इफेक्ट. जो मेन हमारा फोकस रहना चाहिए वो किस पे होना चाहिए. एफडीआई इनफ्लोज मस्ट इम्प्रूव. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की इनफ्लोज ये इम्प्रूव होनी चाहिए. While the trade deficit will have to be managed, trade deficit भी हमें manage करना है. हमारे exports ज़्यादा होने चाहिए as compared to our imports. Then only we can sustain in a long term basis. Okay?
अब ये क्वेश्चन है, दिस इज अ प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन ओनली, रिसेंटली आया है ये, इट इज आई थिंक इट इज फ्रॉम 2024 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है इकोनॉमी का, रुपी की वैल्यू को लेके। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इज दैट इट नेसेसरी। अब अगर कोई करेंसी डिवैल्यूएट हो रही है, जैसे कि रुपी गिरता जा रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू कम हो रही है इन कंपैरिजन टू व्हाट, इन कंपैरिजन टू डॉलर, दैट इज योर डिवैल्यूएशन। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, नेसेसरली इसका इफेक्ट क्या होगा, इनमें से आप करेक्ट स्टेटमेंट्स फाइंड करेंगे। तो तीन ऑप्शन दिए, लेट्स सी। अब अगर हमारी रुपये की वैल्यू फॉल करेगी इन कंपैरिजन टू डॉलर्स, तो इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, वेरी सी। It improves the competitiveness of domestic exports in the foreign markets. देखिए, अब जैसे ही रुपये डेप्रिशिएट होता है ना, हमारे एक्सपोर्ट्स जो होते हैं वो कम्पिटिटिव हो जाते हैं और इम्पोर्ट्स महंगे हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक्सपोर्ट हमारे हमेशा बेनिफिट करेंगे, जब भी हमारा रुपये गिरेगा तब हमारे एक्सपोर्ट बेनिफिट करेंगे, बट जो हमारे इम्पोर्ट्स होंगे वो महंगे हो जाएंगे। दैट इज वाई ये बोलते हैं कि इंडिया शुड बी अ नेट एक्सपोर्टर, की रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट करेगी तो हमारे एक्सपोर्ट्स में फायदा रहेगा, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, improves the foreign value of domestic currency। अगर डिवैल्यूएट करेगी कोई करेंसी तो क्या उसकी फॉरेन वैल्यू इंक्रीज करेगी, नो, इट विल डेप्रिशिएट होगी ना, रुपये की वैल्यू कम होगी, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट, improves the trade balance। ट्रेड बैलेंस इंप्रूव हो जाएगा, अगर रुपये की वैल्यू कम होगी तो ट्रेड बैलेंस विल नॉट improve, it will worsen। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। अगर हमारा रुपये डॉलर के कंपैरिजन में गिरता चला जाएगा तो हमारा ट्रेड बैलेंस भी वर्सन होगा, ठीक है। So this statement is also wrong. Now, a question है मुझे, which of the above statements are correct, only one should be the answer. So one only is the answer, A answer होगा। The correct answer is B, ठीक है। I hope this is clear. Economics is a scoring subject, you should know the basic concept, you will be able to answer it. अभी नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। दिस आर्टिकल इज ऑफ द इबोला वायरस। Ebola unit is for infected Americans, sparks protests and political crisis in Kenya. This heading is not very important for us, but this article related to Ebola virus. Now, Ebola virus के बारे में आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, I have included it. This article is not important. Let's see now, Ebola virus के बारे में। The World Health Organization, ये न्यूज का कंटेक्स्ट है कि इबोला वायरस न्यूज में क्यों है इस टाइम पे। The World Health Organization (WHO) declared the Ebola outbreaks in the Democratic Republic of Congo, this is what DRC, and Uganda a global public health emergency under the international health regulation। अब ये जो दो कंट्रीज हैं, DRC एंड युगांडा, ये हैं अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहां पे इबोला का आउटब्रेक हुआ है, WHO ने डिक्लेयर किया है उसको ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अंडर द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, ठीक है। अभी जो डीआरसी है ना, इस पे यूपीएससी ने पहले भी एक क्वेश्चन पूछा है। द क्वेश्चन वाज कि कॉपर के रिजर्व सबसे ज्यादा ग्लोबली कहाँ फाउंड होते हैं, सो इन द ऑप्शन वन ऑफ इट वाज डीआरसी। अब इसका आंसर डीआरसी ही था। कॉपर के हाईएस्ट रिजर्व्स हमारे कहाँ पे फाउंड होते हैं, डीआरसी में फाउंड होते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। Now it is again in news, African nation, the DRC, it is again in news because of your Ebola virus outbreak. DRC and Uganda, so you should know about it. Ebola virus है क्या है? So let's read about it. Ebola virus. It is a severe and often deadly viral disease caused by a group of viruses known as ortho-Ebola viruses. ठीक है, डेडली वायरसेस का ग्रुप है ये ऑर्थो इबोला वायरसेस। इसको पहले बोलते थे इबोला वायरस, अभी इसको बोलते हैं ऑर्थो इबोला वायरसेस का ग्रुप है। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं। इट इज ऑर्थो इबोला वायरस। नाउ नेक्स्ट इज अ सिवियर कॉन्टेजियस डिजीज। कॉन्टेजियस क्या होता है, इन्फेक्शियस डिजीज है अफेक्टिंग ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स, ठीक है। दोनों को अफेक्ट करता है, ह्यूमंस को भी नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में आपके एप्स आ जाते हैं, बेसिकली एप्स, मंकीज एंड ह्यूमंस आर पार्ट ऑफ प्राइमेट्स। Apes, monkeys, and ape primates. Now next, Ebola, first identified in 1976 in southern Sudan and DRC, primarily affects remote villages in Central and West Africa. अभी लोकेशन दी है कि अफ्रीका के ये वाले एरियाज को वो ज्यादा इफेक्ट करते हैं। कौन से एरियाज हो गए, सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीकन एरियाज को ज्यादा इफेक्ट करता है।
फर्स्ट टाइम कब आइडेंटिफाई हुआ था? 1976 में. नेक्स्ट, it is known as, this is important, very very important, it is known as hemorrhagic fever virus because it can cause problems with the clotting system of the body. अब इसमें क्या होता है? हेमरेजिक फीवर वायरस इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपकी जो बॉडी का ब्लड है, इट स्टॉप्स मेकिंग क्लॉट्स. अगर कहीं पे आपको कट लगता है ना, दैट कट will stop bleeding only when there will be a clot formation in your body. अब इस चीज में, इसमें हेमरेजिक फीवर इस वायरस को इसलिए बोलते हैं कि वहां पे क्लॉटिंग का सिस्टम ही खराब हो जाता है बॉडी में. ठीक है. It leads to internal bleeding as blood leaks from the small blood vessels. So internal bleeding की प्रॉब्लम हो जाती है इसमें. ठीक है. ब्लड लीक करना शुरू हो जाता है स्मॉल ब्लड वेसल्स और क्लॉट्स नहीं फॉर्म होते. Now we come on to the transmission now. The virus is transmitted to people from wild animals. कौन से animals होते हैं? Such as fruit bats, porcupines, and non-human primates. So these names you should remember: fruit bats, porcupines, and non-human primates. से ये transfer हो जाता है. कहाँ से? इन animals से humans में transfer होता है. It then spreads in the human population through direct contact with the blood, secretions, organs, or other bodily fluids. तो बेसिकली बॉडीली फ्लूइड से ये ट्रांसफर होता है ऑफ इन्फेक्टेड पीपल एंड विद सर्फेसेस एंड मटेरियल्स कंटामिनेटेड विद दीस फ्लूइड्स. बेसिकली जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ये बॉडीली फ्लूइड से होता है. कोई सरफेस पे, कोई मटेरियल पे अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडीली फ्लूइड्स हैं और उसके कांटेक्ट में हेल्दी पर्सन आ जाता है, ही विल बी इफेक्टेड बाय. दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इबोला कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय एयर. कौन सा वायरस एयर से ट्रांसमिट हो रहा था जिसकी वजह से पैंडेमिक हुआ था? इट वाज योर कोविड-19. कोविड-19 वाज बीइंग ट्रांसमिटेड बाय एयर. बट अगर आपको पूछे कोई कि इबोला वायरस भी सेम स्प्रेड करता है, एयर से स्प्रेड करता है, द आंसर इज नो, इट स्प्रेड्स बाय बॉडीली फ्लूइड्स. इट इज आल्सो नोन एज हेमोरेजिक फीवर वायरस. सो दीस आर सम इंपॉर्टेंट. नाउ इसके सिम्टम्स पे आते हैं. सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, डायरिया, वॉमिटिंग, ब्लीडिंग एंड ऑफन डेथ. डेथ भी रिजल्ट हो सकती है इससे. The average Ebola disease case fatality is around 50%. Fatality rate जो है वो 50% के अराउंड है कि जितने लोग अफेक्ट होंगे उसमें से approximately half of them will die. Okay, case fatality rates have varied from 25 to 90% in the past outbreak, जिसकी average है 50%. ठीक है, I hope this is clear. अब इसका ट्रीटमेंट पे आते हैं. There is no known cure for Ebola. That is why it is deadly, क्योंकि अभी तक इसका क्योर हमें नहीं होता. There are no approved drugs or vaccines available to treat the Ebola virus disease. अभी तक कोई भी approved drugs या vaccines नहीं है. Although experimental vaccines and therapeutics are being tested. Experimental drugs को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं. Recovery seems to depend in part on how much virus a person was initially exposed to. Recovery किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कितना वायरस वो पर्सन ने अपनी बॉडी में लिया था. ठीक है, इनिशियली एक्सपोजर उसका कितनी ज्यादा वायरस को हुआ था. हाउ अर्ली द ट्रीटमेंट स्टार्टेड. ठीक है, एंड ऑन द पेशेंट्स एज एंड इम्यून रिस्पॉन्स. अब अगर किसी पेशेंट का इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेटस होगा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मतलब उसकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ऑब्वियसली ही विल बी अफेक्टेड एट अ लार्जर स्केल. ज्यादा लेवल पे उसको वो चीज अफेक्ट करेगी. करंट थेरेपी कंसिस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. अभी जो हम लोग थेरेपी दे रहे हैं बेसिकली मेंटेनेंस की थेरेपी दे रहे हैं कि फ्लूइड लेवल, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन कर सके, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड प्लाज्मा टू कंट्रोल द ब्लीडिंग. बेसिकली इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, उसकी वजह से बहुत ब्लड लॉस होता है. अब उस चीज को कंट्रोल करने के लिए भी ब्लड वगैरह एडमिनिस्टर कर दिया. So this was about this article. You should know about कि इसको hemorrhagic fever भी बोलते हैं. अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि these are the following statements about hemorrhagic fever, so you will not get surprised by कि क्या ही पूछ लिया. Hemorrhagic fever is your Ebola virus. Now we'll come on to the next article now. Indian reservoirs can host 102 gigawatts of floating solar. Floating solar क्या होता है? बेसिकली इस आर्टिकल में वो चीज कवर की है. I'll tell you. फ्लोटिंग सोलर को हम लोग फोटोवोल्टेक्स भी बोलते हैं. ठीक है, refers to a photovoltaic solar panels mounted on buoyant structures. buoyant structures होते हैं जो कि फ्लो करते हैं, पानी के ऊपर फ्लो करते हैं, वो स्ट्रक्चर्स होते हैं.
that floats on bodies of waters like. अब ये सोलर पैनल हमने कहाँ पे माउंट किया? सी दिस इमेज, पानी के ऊपर जो सोलर पैनल्स माउंट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग सोलर, या फिर उसका अनदर नेम क्या पढ़ा हमने अभी? फोटोवोल्टिक्स। Bind structures that float on bodies of water like lakes, reservoirs and ponds is an ideal land saving renewable energy solution. इससे बहुत land save हो जाती है आपकी for another purposes, ठीक है? That boosts panel efficiency through the natural cooling effect of water. अब जो सोलर पैनल्स होते हैं ना उनके एक प्रॉब्लम ये होती है कि दे गेट हीटेड अप वेरी सून। अब उनको उस वजह से वो जो हीट होती है ना उसकी वजह से उसके पार्ट्स भी डैमेज होते हैं बहुत बार, ठीक है? दैट इज वाई ऑल्सो दे आर नॉट वेरी इफेक्टिव टिल डेट। बट ये अगर पानी के ऊपर माउंट कर दोगे तो वाटर के नेचुरल कूलिंग इफेक्ट से वो चीज काउंटर बैलेंस हो जाएगी, ठीक है? Renewable energy solution that boosts the panel efficiency, panel की efficiency बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि through the natural cooling effect of water उसकी heat को absorb कर लेगा and they will have a more lifetime, more lifespan. Okay. Now let's come on to the article. Article says India's reservoirs. Reservoirs कौन से? Water reservoirs, lakes, rivers, ponds can host about 102 gigawatts of floating solar capacity as per the first comprehensive national assessment of the technology's potential by the किस इंस्टीट्यूट ने ये फाइंडिंग्स की है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, NISC बोलते हैं इसको, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी एंड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। The report title is Solar PV Potential of India Floating Solar frames panels on waters as a way around one of the most intractable obstacles in solar sector, land. अब जो लैंड का फैक्टर है ना वो सोलर सेक्टर में बहुत बड़ा फैक्टर कि पहले लैंड प्रोक्योर करो, ठीक है? कि वो और किसी पर्पस के लिए नहीं यूज हो पाएगी। अगर वो सोलर पैनल लग गए उस लैंड पे, ऑब्वियसली दैट लैंड कैन नॉट यूज फॉर एनी अदर पर्पस। अब ये बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ये कामयाब होगा, जो फ्लोटिंग सोलर का प्रोजेक्ट है ये कामयाब हो जाएगा कि लैंड की प्रोक्योरमेंट उस चीज में नहीं चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं। अब इसमें एग्री फोटोवोल्टिक्स मेंशन किए। एग्री फोटोवोल्टिक्स क्या होते हैं? रेफर टू द फार्म बेड्स दैट आर शेल्टर्ड बाय स्ट्रक्चर्स ऑन व्हिच सोलर पैनल्स आर माउंटेड। अभी किसी फार्म पे आपने सोलर पैनल्स लगा दिए, दैट इज नोन एज योर एग्री फोटोवोल्टिक्स। एग्रीकल्चर के साथ में आप लोग सोलर एनर्जी भी वो कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट इज योर एग्री फोटोवोल्टिक्स। दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, ठीक है? नाउ एक्वायरिंग लैंड, लैंड के बारे में अभी इन्होंने बोला ground-mounted solar systems which dominate India's about 100 gigawatt of installed solar capacity. ये अभी dominate कर रहे हैं इंडिया की solar capacity को, ठीक है? Need 3 to 4 times more area or megawatts than the panels themselves offer. अब जो लैंड ऑक्यूपाई हो रही है ना वो बहुत ज्यादा चाहिए हमें पैनल के कंपैरिजन में। पैनल्स आ गई, ठीक है, बट इसी लैंड जो चाहिए ना उससे भी ज्यादा लैंड चाहिए। A floating solar is land neutral and a solution to this land problem. Floating solar can be your solution. Okay. This was about this article. India's flagship in the Omkareshwar floating solar park on river Narmada. This is important. In Madhya Pradesh, Khandwa district had 278 megawatts, the country's largest, with plans to create 600 megawatts. ये वाला जो प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश में रिवर नर्मदा के ऊपर ओंकारेश्वर में, ठीक है, खांडवा डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। ये सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्रोजेक्ट है टिल डेट। 278 मेगावाट इसने रीच कर लिया, पर इसके प्लान्स क्या है 600 मेगावाट तक ये रीच कर, ठीक है? अभी तक के लिए इंडिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर प्लांट वहीं है। I hope this article is clear. Now we move on to the next one. Industry hired 1.18 lakh flexi workers in the last 12 months, says ISM. इसमें आपको फ्लेक्सी वर्कर्स पता होना चाहिए कि व्हाट आर फ्लेक्सी वर्कर्स। दिस इज व्हाई आई हैव यूज्ड दिस आर्टिकल। अब रिपोर्ट क्या कह रही है? ISF कौन है? द इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन। व्हाट इज इट बेसिकली? इट इज an apex body for the flexi staffing industries in India. Said that despite cautious market sentiment in 2025 and 2026 on account of geopolitical uncertainties, कि 2025 और 2026 में जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज रही है, वॉर्स वगैरह बहुत ज्यादा रही है, उसके बावजूद भी the industry added 1.18 lakh new foreign flexi workers over the last 12 months, recording an
8% year-on-year growth in the employment. इन फैक्टर्स के बावजूद भी फ्लेक्सी वर्कर्स की एडिशन 8% ज्यादा रही है लास्ट ईयर के कंपैरिजन से, ठीक है। अब फ्लेक्सी वर्कर्स होते हैं, लेट्स कम ऑन टू दिस, इज एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल। Flexi workers are professionals employed in a temporary or project-based or contractual basis. So these terms you should know. कि temporary होते हैं ये employed जो professionals होते हैं, project basis पे employ किया जाता है, इनको contractual basis पे employ किया जाता है, third party staffing agencies. Instead of being on a company's permanent payroll, company के permanent payroll पे नहीं होते हैं, ये temporary होते हैं. They allow businesses to rapidly scale their workforce up or down, making them highly popular in industries like e-commerce, IT, and logistics. तो ये मेन इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे फ्लेक्सी वर्कर्स ज्यादा रहते हैं। ई कॉमर्स की इंडस्ट्रीज हैं, आईटी की इंडस्ट्री है, लॉजिस्टिक्स की इंडस्ट्रीज। बेनिफिट्स देखते हैं अभी फ्लेक्सी वर्कर के बेनिफिट क्या रहते हैं, बिजनेसेस के लिए क्या बेनिफिट रहते हैं और वर्कर्स के लिए खुद क्या बेनिफिट रहते हैं फ्लेक्सी वर्कर में। For businesses, provides operational agility and cost efficiency without long-term employment commitment. कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स के बिना ही उनको कॉस्ट इफेक्टिव बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस मिल रही हैं, तो ये बिजनेसेस के फायदे में होते हैं। ज्यादा पैसे उनको स्पेंड नहीं करने पड़ रहे हैं उनको परमानेंट जॉब्स देने के लिए, बट दे आर ऑन कंट्रैक्चुअल बेसिस, सो दैट इज वेरी कॉस्ट एफिशिएंट फॉर द बिजनेसेस। नेक्स्ट, वर्कर्स के लिए क्या फायदा है, ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड हो जाती है उनको क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। Provides a valuable stepping stone for the first time job seekers or fresh graduates to enter the formal economy. अब जो ग्रेजुएट्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम जॉब सीख कर रहे हैं उनके लिए भी ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, सो दैट वी कैन गेन एन एक्सपीरियंस इन सम सेक्टर एंड देन प्रेशर का टैग बढ़ जाएगा बेसिकली इनसे, ठीक है। उन लोगों को ये हायर कर लेते हैं जो फ्रेशर्स रहते हैं, ठीक है। फ्रेशर्स को ये फायदा होता है कि उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता है, उनको एक्सपीरियंस भी मिल जाता है फॉर फर्दरिंग देयर जॉब अपॉर्चुनिटीज, ओके। अब इस पे क्वेश्चन पे आते हैं। It's a prelims question. Consider the following statements regarding the flexi workers in the Indian context. Flexi workers के context में आपको ये statements consider करनी है. You have to tell which of these statements are correct. Correct statements ढूंढनी है, 3 statements दी गई हैं. Flexi workers are typically employed in the formal sector with structured long-term employment contracts. तो long-term contracts होते हैं इनके? नहीं होते. Short term contracts होते हैं तभी इनको रखते हैं, ठीक है। So this statement is wrong. Short term contracts होते हैं, long term नहीं, ठीक है। Now let's come on to the next statement. They often lack health access to social security benefits. Access to social security benefits such as provident funds, health insurance and pensions. तो ये सब benefits मिलते हैं इनको फ्लेक्सी वर्कर्स को? नहीं मिलते। गिग वर्कर्स वगैरह जो होते हैं तो ये सब benefits नहीं मिलते ना। This statement is correct. Third statement, the category of flexi workers encompasses gig workers, freelancers, and various contractual workers who are not bound by traditional employer-employee relationships. So this statement is also correct. ये सभी होते हैं flexi workers के पार्ट, gig workers हो गए, freelancers हो गए, और बाकी के contractual workers हो गए. They are not bound by traditional employer-employee relationships. मतलब कि permanent relationship से ये लोग bound नहीं होते, temporary relationships होते हैं. ठीक है, so this statement is also. So which of the statements are correct? Only 2 and 3 are correct. So the option B is correct. Second and third statements are correct. So this was the article. Flexi workers per direct question asked. Now let's move on to the next article. This is the last article for the day. Foreseeable accidents. न्यूज में बहुत ज्यादा इस टाइम पे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स काफी ज्यादा जगहों पे हो रहे हैं, ठीक है। उसके रिलेशन में ये न्यूज आर्टिकल है आज। Industrial mishaps are due to accumulated organizational weaknesses. अब इसके reasons भी हैं कि industrial mishaps होते क्यों हैं? Organizational weaknesses होती हैं जिसकी वजह से mishaps होती हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री में ही कमी रहती है जिसकी वजह से ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं. Despite there having been a streak of industrial accidents in India of late, बहुत ज्यादा industrial accidents हो रहे हैं इंडिया में. The notion that they are isolated and incidental persists. But still ये notion persist कर रहा है कि ये जो accident है ये एक isolated accident है, बाकी जगह तो सब सही ही चल रहा है. This notion is still persisting इतने सारे accidents हो जाने के बावजूद.
ठीक है, within days of each other, 4 workers were killed in a mishap in a septic tank in Surat, while 9 workers were killed by an explosion at a steel plant in Visakhapatnam. अभी कुछ इंस्टेंसेस दिए हैं कि अभी रिसेंट टाइम्स में कौन कौन से मिसहैप्स हुए हैं जो न्यूज में आए हैं. ठीक है, नेक्स्ट द वर्किंग एरिया. अभी कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस दिए हैं इन्होंने कि हम लोग ये जो मिसहैप्स हो रहे हैं इनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है इंडस्ट्रियल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरिंग कर. So the working area must be mechanically ventilated. जहाँ भी वो work करें workers वो ventilated होना चाहिए. And have rescue personnel on standby while the workers must have breathing apparatuses, harnesses and retrieval lines. तो ये सब वर्कर्स के पास में होना चाहिए कि ब्रीदिंग अपरेटस होना चाहिए, हार्नेस होनी चाहिए, उनकी सेफ्टी के लिए रिट्रीवल लाइंस होनी चाहिए जहाँ से उनको रेस्क्यू किया जा सके एंड क्लियर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन. अनप्रोटेक्टेड एंट्री मस्ट बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. किसी भी एरिया में अनप्रोटेक्टेड एंट्री नहीं होनी चाहिए. प्रॉपर अपने सेफ्टी गियर्स के साथ में ही एंटर करना. सेप्टिक टैंक डेथ्स एंड deaths due to manual scavenging are in fact rarely accidents in the sense of unforeseeable events but failures of basic safety management. अब जो सेप्टिक टैंक्स में डेथ्स होती हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक्सीडेंट्स हैं, बट ये कुछ अनफोर्सेबल इवेंट्स भी नहीं है. ये बेसिक सेफ्टी मैनेजमेंट के फेलियर्स का पार्ट कि बेसिक सेफ्टी उनको बेसिक सेफ्टी गियर नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है जिसकी वजह से वो डेथ्स हो रही हैं. टॉक्सिक गैसेस की वजह से सेप्टिक टैंक्स में डेथ्स होती हैं. ठीक है, तो बेसिक सेफ्टी अपैरेटस इज मस्ट. बेसिक सेफ्टी मैनेजमेंट शुड बी देयर. हम नेक्स्ट आते हैं. A major industrial accident is almost always due to the accumulation of organizational weaknesses. कुछ ना कुछ उस ऑर्गेनाइजेशन में वीकनेस रहती है जिसकी वजह से हमारा एक्सीडेंट प्रोन हो जाता है ओरिजिन. ठीक है, दिस इज द बेसिक ऑफ दिस आर्टिकल. Occupational safety research has consistently found that contracted workers face higher risk because they may receive less training and operate within systems with fragmented accountability. सिस्टम्स की अकाउंटेबिलिटी नहीं है इसीलिए वो लोग ज्यादा इस लेवल पे फेस कर रहे हैं. क्या फेस कर रहे हैं? एक्सीडेंट्स फेस कर रहे हैं वर्कर्स. नेक्स्ट, द इंसिडेंट्स हैव आल्सो अकर्ड ड्यूरिंग द ग्रेजुअल एंड अनइवन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियाज न्यू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी फ्रेमवर्क. अभी हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी फ्रेमवर्क है इंडिया में, स्टिल द एक्सीडेंट्स आर occurring. Highlight the invisible fact that countries and customs remain anchored by old problems of manpower shortage, caste and class-based exposure to hazardous labor, and a cross towards safety mindset in financially stressed units. तो फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड यूनिट जो होते हैं जिनके पास में इतने ज्यादा पैसे नहीं होते सेफ्टी कॉस्ट कवर करने के लिए, वो ज्यादातर एक्सीडेंट प्रोन है. These are some of the issues that need to be covered so that हमारा इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स जो है वो सेफ्टी की तरफ जाए. इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स को हम लोग रिड्यूस करते हैं. दिस इज अ सिमिलर आर्टिकल, ये भी सेम हिंदू न्यूज़पेपर में आया है. मेजर लैक्यून इन रिपोर्टिंग इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स. कई जगह तो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स रिपोर्ट ही नहीं हो रहे हैं. The inconsistencies in the data compiled by the Labour Bureau and DGFASLI point to severe lapses in reporting of industrial accidents. ठीक है, अब ये चीज क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टोरेट जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट्स. ये इसकी फुल फॉर्म है. अब ये भी इन कॉम्बिनेशन विद योर लेबर ब्यूरो ये लोग कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स की रिपोर्टिंग बहुत कम हो रही है. ठीक है, see these are the deaths and injuries reported in fire accidents in factories as per ABSI. ये डेथ्स वाला है रेड वाला कॉलम है, ब्लू वाला है जो इंजरीज का कॉलम है. यू कैन सी हाउ मेनी आर दिस. Again, this graph, the share of factories inspected by them each year in percentage. The inspections have dropped significantly in the recent years, perhaps due to the staff crunch. अब स्टाफ की शॉर्टेज है, ये जो इंस्पेक्शन एजेंसीज है इसमें, जिसकी वजह से अब इंस्पेक्शन भी बहुत कम हो गई है in comparison to the previous years. 2010 में you can see the graph was higher. 2022 में ग्राफ कितना कम आ गया. इंस्पेक्शन ही नहीं हो रही है, फेलियर्स के रीजन ही ये है. ठीक है, अगर कोई इंडस्ट्री की इंस्पेक्शन नहीं हुई दे विल इवेड देयर अकाउंटेबिलिटी, किसी को आंसरेबल नहीं है, एक्सीडेंट्स प्रोन बन जाएंगे. नाउ वी कम ऑन टू द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस आर्टिकल. Consider the following statements regarding the regulatory and legal framework for the industrial accidents in India. Each statement, so you have to see how many of them are correct.
Which of the given statements above are correct? First statement. The Public Liability Insurance Act 1991 mandates that relief to victims of accidents involving hazardous substances be provided on a no-fault liability basis. वो कह रहे हैं कोई भी विक्टिम होते हैं जो कि एक्सीडेंट्स के होते हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा नो फॉल्ट लायबिलिटी बेसिस पे कि उनकी फॉल्ट नहीं थी. This statement is correct. Public Liability Insurance Act 1991 ही mandate करती है. ठीक है. Next statement, second statement. The Environment Protection Act 1986 was enacted as a direct consequence. This statement becomes important of Bhopal gas tragedy to provide a framework for environmental protection and accident prevention. जब भोपाल gas tragedy हुई थी, उसके बाद में Environment Protection Act came into force. ठीक है. उस tragedy का direct consequence था कि Environment Protection Act came into force. So this statement is also correct. Now the next statement is the third statement. The Factories Act 1948 contains specific provisions for the constitution of site appraisal committees to advise on the initial location of factories involving hazardous processes. This statement is also correct. So the correct answer to this will be all the three statements are correct. Okay. So this was about this article. And I hope you understood the articles covered in today's session. ठीक है. कोई भी issue है, you can report it in the comment section. PDF will be given in the description box. Okay. I'll see you in the next session. Thank you. Goodbye.